welcome to maths class, and today we'll do decimals. So the concept we are going to cover in this chapters are decimal fraction, like fraction and unlike fractions, place value chart of decimals, addition and subtraction of decimal, multiplication of decimal and division of decimal. So when we go to market to buy vegetable or fruit etc., weight of these things never come whole numbers but it comes in decimal. Write 4 situations in which we use decimals. Like जब हम रुपीज़ और पैसे की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी कॉस्ट 50 रुपीज़ 50 पैसा है, सो विल यूज़ डेसिमल. अगर कभी हम जैसे कोई चीज़ खरीदते हैं, वी आर बाइंग फ्रूट्स और वेजिटेबल, वी आस्क व्हाट इज़ द वेट, he say कि 1.5 kg, there we are using decimals. So there are so many situations where we are using decimals in our daily life. So start with the introduction. In the previous class we have learned about the decimal, their comparison, addition and subtraction. In this class we will learn multiplication and division of decimals. Decimal fractions. Fraction whose denominator is in the form of 10, 100, 1000 etc. That is called the decimal fraction. जिसका भी denominator 10, 100 या 1000 means 10 के multiples में हो. Clear? So 3 by 10, 41 upon 100, 37 upon 1000 etc. That is called the decimal. 3 by 10 को हम लिख सकते हैं because 3 के नीचे क्या 10, 10 में कितने 0 है 1 0. So numerator and numerator after one digit will put the decimal. 41 upon 100 2 0, so in numerator after 2 digit will place the decimal, so 0.41. 37 upon 1000 3 0, so after 3 digits, so there are only 2 digits in numerator, so we'll put 0 there, so that is equals to 0.037. The part before the decimal point, that is called the whole number part, and after the decimal, that is known as decimal part. So here we'll take an example, 91.632. So 91, that is the whole part before the decimal, and after decimal 632, that is the decimal part. Now like decimal. Decimal having the same number of decimal places, they are called like decimal. Like 6.32, after decimal 3 digits. 19.125, decimal के बाद 3 digits. So they are called like decimal. Unlike decimal, the decimal having different number of decimal places, they are called unlike decimal. Like 9.632, after decimal 3 digits. 15.32, after decimal 2 digits. 37.2854, 4 digits after decimal. So they are unlike decimal. The digit on the left hand side of the decimal points are read as a whole number. जो left hand side पे होगी उसको हम whole number पे पढ़ेंगे, and after the decimal जो भी होगी right hand side पे उसको हम क्या करेंगे digit wise read करेंगे. Like 47.912, हम इसको ऐसे read नहीं करेंगे 47.912, we will read it as 47.912. Clear? Next, multiplication of decimals. Multiplication by 10, 100, 1000 etc. When we multiply any decimal by 10, the decimal point shift to one place right. If we multiply 100, the decimal point will shift to 2 place on the right. 1000 से करेंगे 3 place on right. Clear? It's very easy. Example लेते हैं. Multiply the following. 16.782 multiply by 10. So 10 से multiply कर रहे हैं. So 1 place on the right hand side. The decimal will shift. So that is equals to 167.82. Clear? Next is multiplication of a decimal by a whole number. So decimal को हम whole number से कैसे multiply करेंगे? Multiply the decimal number by the given whole number simply. जैसे हम multiplication करते हैं same way. Insert a decimal point in the product as many places of decimal are given in the decimal. तो जितने भी हमें दे रखे हैं उसमें decimal, उसके according हम product में decimal लगा देंगे. Example समझते हैं. Multiply the following. 19.638 by 72. So अभी हम डेसिमल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम 19,638 को 72 से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली वैसे किया है. क्लियर? सो दैट इज इक्वल्स टू 14,13,936. नाउ जो हमारा ओरिजिनल नंबर था दैट वाज 19.638. सो 1 2 3 3 डिजिट के बाद डेसिमल था. सो इन द प्रोडक्ट आफ्टर 3 डिजिट 1 2 3 विल प्लेस द डेसिमल. क्लियर? Next is multiplication of a decimal by a decimal. So multiply the two decimals simply just like the multiplication whole number. जैसे हम simply multiplication करते हैं वैसे ही करेंगे. Then we will insert the decimal in the product such a way that the number of decimal in the product from the right to left, that is equal to the sum of decimal
प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल मीन जितने मल्टीप्लायर में एंड मल्टीप्लिकेंट में हैं उनकी इक्वल. क्लियर. एग्जाम्पल लेते हैं. We have to multiply 64.125 by 3.63. So both are decimal numbers. So simply हम जैसे decimal को बिना consider किए simply जैसे multiplication करते हैं वैसे करेंगे. So here we have multiplied and this is the product. Now we'll count the number of decimals. So in multiplier after 2 digit and in multiplying 3 digit, so total 5 digit. So after start from the right hand side, after 5 digit you will place the decimal. 1, 2, 3, 4, 5. Clear? Next is evolution time 4.1. Fill in the blanks. 6.7 into 10 that is equals to 67 because decimal point जो है one place right में shift हो जाएगा. Multiply the following. 6.25 into 18. तो 625 को हम 18 से multiply कर देंगे. 4 50 then 5 2 6 0 5 2. Now 6.25 after 2 digit will place the decimal 112.50 that will be the product. Next multiply the following. Same way 7.123 3 multiply by 3.6. So हम क्या करेंगे 7123 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे. जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 1 digit here and 3 digit here means after 4 digit we'll put the decimal. Clear? It's very easy. Next multiply the following. 4.2 multiply by 0.06 multiply by 0.8. So simply हम decimal को consider नहीं करेंगे. 42 6 and 8 that is equals to 48. We will simply multiply them and we'll count the number decimal 1 2 यहाँ पे हो जाएंगे 3 and 4. After 4 digit we will put the decimal right hand side से after 4 digit जो भी हमारा product आएगा we'll put the decimal. That will be our final product. Clear? Next division of decimals. Division of decimal by 10, 100, 1000 etc. So when we divide any decimal by 10 the decimal point shifted to left by 1 place. अगर 10 से करेंगे if we divide by 100 the decimal point shift to 2 place on the left. If we dividing by 1000 it will shift 3 places to left. Example लेते हैं. Divide the following. 164.72 divided by 10. So decimal point क्या होगा left में shift हो जाएगा 1 point. So that is equals to 16.472. Next is division of a decimal by a whole number. So simply divide the decimal, consider the whole number by the given whole number. Clear? यहाँ पे जैसे हम करते हैं उसी तरीके से करेंगे. Put the decimal point in the quotient where the whole number part of the decimal divided completed and proceed. Example लेते हैं. Divide the following 66.366 by 18. So 66.366 को हम 18 से divide करेंगे. First हम लेंगे 66. So 18 3s are 54. Subtract करेंगे 66 में से 54 will get 12. And उसके बाद क्या है decimal है. So put the decimal in the quotient. After that we note down the next number that is 3 and that is 6 times 108 हो जाएगा. Subtract करेंगे will get 15. Next number note down करेंगे. तो जैसे हम division करते हैं उसी तरीके से करेंगे. जहाँ पे भी हमारा whole number part end होता है we'll put the decimal in the quotient. Clear? Next is division of a decimal by the multiple of 10, 100, 1000 etc. Split the multiples like this. 500, 5 into 100. 6,000, 6 into 1000. 18,000, 18 into 1000. 2400, 24 into 100. Then divide simply. Example लेते हैं. Divide the following. 6.25 by 200. So 200 we can write it as 2 into 100. So 6.25 को हम 2 से divide करेंगे. So that is equal to 3.125. Clear? Now we will divide by 100. So 100 के लिए क्या करेंगे 100 से divide करेंगे तो decimal point क्या हो जाएगा 2 place left में shift हो जाएगा. So that is equal to 0.03125. Next is division of a decimal by a decimal. Convert the divisor. जो भी हमारा divisor होगा उसको हम whole number part में convert करेंगे. whole number में convert करेंगे by multiplying the suitable number of 10, 100, 1000 and
सेम जिस नंबर से हम कर रहे हैं उसी से हम जो है हमारा जो डिविडेंड है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ डिवाइड द न्यू डिविडेंड बाय न्यू डिवाइजर. एग्जाम्पल लेते हैं. वी हैव टू डिवाइड 0.3564 बाय 0.27. सो हमारा डिवाइजर इज 0.27. टू कन्वर्ट इनटू होल नंबर विल मल्टीप्लाई बाय 100. क्लियर? सो हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर है यानी कि जो हमारा डिविडेंड है उसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा 35.64 डिवाइड बाय 27. एंड सिंपली जैसे हम डिवीजन करते हैं उसी तरीके से करेंगे. दैट इज इक्वल्स टू 1.32. क्लियर? नेक्स्ट इज इवोल्यूशन टाइम 4.2. फिल इन द ब्लैंक्स. 8.63 डिवाइड बाय 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, 1 प्लेस लेफ्ट में. सो दैट इज इक्वल्स टू 0.863. नेक्स्ट डिवाइड द फॉलोइंग. 467.2 डिवाइड बाय 4. सो 467.2 को 4 से डिवाइड करना है. 4 1 4, 0. नेक्स्ट नंबर 6, 4 1 4, 2, 4 6 24, 3. नाउ हमारा होल नंबर पार्ट एंड हो गया. डेसिमल स्टार्ट हो रहा है, वो पुट डेसिमल हियर and 8. So 116.8. Clear? Next is divide the following. 6.25 divided by 5,000. So 5,000 we can write it as 5 into 1,000. So 6.25 को हम divide करेंगे 5 से. Now 1000 से डिवाइड करेंगे. सो दैट इज इक्वल्स टू आफ्टर 3 डिजिट, 1 डिजिट यहाँ पे है तो 2 zeros लगा देंगे. 0.00125. क्लियर? नेक्स्ट इज डिवाइड द फॉलोइंग. 41.008 डिवाइड बाय 1.6. 1.6 को हम क्या करेंगे, दैट इज डिवाइजर. होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स हमें डिविडेंड को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है. तो ये हो जाएगा 410.08 डिवाइड बाय 60. तो जैसे हम सिंपली डिवीजन करते हैं उसी तरीके से करेंगे. नेक्स्ट इज लुक बैक. फ्रैक्शन whose denominator are in the form of 10, 100,000 etc. they are called the decimal fraction. A decimal has two parts, whole number part and the decimal part. Like decimal have the same number of decimal places and unlike decimal have the different number of decimal places. To multiply a decimal by 10, 100,000 etc. shift the decimal point in the product by as many places of the right as there are 0 in the multiplier after 1. When we multiply a decimal by a whole number or by the decimal, we multiply them by ignoring the decimal point and place the decimal point in the product giving the same number of decimal places as the sum of decimal places in the multiplicand and multiplier. To divide the decimal by 10, 100,000 etc. shift the decimal point to the quotient by as many places to the left as there are 0 in the divisor after 1. Next is, let's recall. So practice all these questions. Next is mental zone. So here we have to multiply 8.6372 by 20. So 8.6372 को हम सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2s are 4, 7 2s are 14, 1, 3 2s are 6 and 1 7, 2 1 17, 1 2 3 4. एंड अब क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज 20 इक्वल्स टू 2 into 10. So that is equals to 172.744. Clear? Next is multiple choice questions. Take the correct answer. 5.286 multiplied by 10, that is equals to 52.86. So B is the correct option here. यहाँ पे चैप्टर एंड होता है. आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया. नाउ टू प्रैक्टिस इट.